So today is Yes, sir. question number 5. Question number 5 today. Write the smallest number of 4 digit. So 4 digit smallest number means 30 after 1. So it is Yes, sir. 1000. And write the greatest number of 4 digit. Greatest number of 4 digit. हाँ नितिन, हेलो नितिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं ना? हाँ नितिन गुप्ता, नितिन बोल रहे हैं। पापा जा रहे, वो प्रतीक्षा आई थी खरे। हाँ प्रतीक्षा खरे नहीं है। अरे वो आई थी तो अकेले गई है, वो फोन उसका स्विच ऑफ बता रहा था। थोड़ा सा कोई फोन नंबर हो तो पता कर लीजिए पहुंच गई कि नहीं। हाँ हाँ अभी आई थी तो फोन उसका स्विच ऑफ बता रहा, थोड़ा सा किसी तरह कंफर्म कर लीजिए, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 49, दैट इज 9999। हाँ तो 9999। तो आंसर कैसे लिखोगे नोटबुक में? आंसर ऐसे लिखोगे, ये राइट द हटा दोगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू ये। ठीक, ये राइट द नहीं लिखोगे, यहां से यहां तक कॉपी कर लेना। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 9999। तो नोटबुक में ऐसे लिखना, ठीक है? तो यू हैव टू कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट is equal to 1000. Greatest number of 4 digit is equal to 9009। बस 2 ही लोग जुड़े हैं आज, कहाँ गए बाकी? Yes. हाँ मयंक आता था, सोनम, वो दोनों नहीं है। मयंक सोनम दोनों बोल रहे हैं। अब देखो, बोलो। हेलो जी। यस सर। स्विच ऑफ है ना? हाँ वही बता रहे हैं ना। और कोई नंबर नहीं है? हेलो, और कोई नंबर नहीं है? अच्छा, अड़ोस पड़ोस, चलिए ठीक हो गया। नंबर ऑन अबैकस, नंबर ऑन अबैकस। अबैकस क्या होता है? अबैकस यू नो? यस सर। अबैकस होता है एक, ये होती वुडन फ्रेम होता है। दिस इज द वुडन फ्रेम। चलो तुम लोग को अबैकस दिखा दूं पहले, है ना? यस। अबैकस, plus 543 plus 515 plus 115. The abacus, it's an ancient piece of technology. Predates the alphabet, predates the invention of glass. This is abacus. This is wooden frame. हेलो, दिख रहा सबको? यस सर। हाँ, दिस इज वुडन फ्रेम, पूरा वुड का होता है, ठीक है? ये पूरा वुडन फ्रेम है। यस सर। इसमें वुड, ये वर्टिकल वुड्स हैं, ठीक है? और ये दीज आर द वीड्स, ये जो गोली लगी है ना पूरी, इनको बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं? वीड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो
इधर से अपना नीचे कई तरह का अबैकस होता है, ये वाला पता नहीं कौन सा है, ठीक है, इसका डिटेल देखो। Now see. About 4,000 years old, and it's really a way to count. It allows us to understand some very key principles about the way that we learn. When people are using the abacus, they use very specific gestures. Use your thumb to lift up the bottom beads, like so, and then your top finger to lift down the upper beads. And so it's really fascinating when these hand movements really allow people to visualize. We can offload memories, offload ideas onto our hands. They are the calculator, because imagining 7,321 plus 5,266 is generally like overwhelmed short-term memory. We need these other tools we have. One of the ways that the abacus works is that you start thinking about pairs. You use something in math that's called decomposition. So it's fascinating to me that a 4,000-year-old technology that was probably used to count sheep in Mesopotamia, has a similar form of doing math in the Common Core. What do you have? It's 7. Yeah! I got 9 because I did this. चाइनीज अबैकस, जापानीज अबैकस, डिफरेंट कंट्रीज के अबैकस होते हैं, ठीक है। अभी देखो कौन सा अबैकस The है। most common abacus type has 13 vertical rods corresponding to place values. On the classical abacus, the lower deck has 5 beads on each rod and the upper deck has 2. The decks are divided by a horizontal bar. I consider the 5+2 type to be the easiest for beginners. On a 5+2 abacus, you can calculate by using the exchange method. I will demonstrate that later. On the modern type 4+1, the lower deck has 4 beads and the upper deck has 1. 5+2 अबैकस होता है। If you want to calculate on लोअर this बीड abacus 5 type, होती है उसमें, you must, ठीक है, पीछे जो दिखा है ये वाला, ये 5+2 तो 1 2 3 4 5 और ऊपर होती है 2 बीड्स, और आगे वाले में क्या है 4+1 1 2 3 4 and 1, ठीक है। Yes. on this abacus type, you must learn how to use so-called complementary numbers. Many people find this difficult in the beginning, but if you want to become a आवाज fast सुनाई दे रही ना? calculator and you also want to be Yes, able sir. to perform mental calculation, you will eventually have to learn this technique too. For the rightmost rod, the value of the beads on the lower deck are 1. On the next rod, the beads on the lower deck are worth 10, and on the next rod 100, and so on. The upper beads are worth 5, 50, 500. That means that every upper bead is worth 5 of the lower beads on the same rod. When a bead is moved towards the bar, it's considered counted. For example, if a bead on the upper deck and 2 beads on the lower deck of the rightmost rod are moved towards the bar, you will have 7. To show how it works, I will count up to 500 on the classical abacus. 1, 2, 3, 4, 5. I exchange 5 1 beads to 1 5 bead. 6, 7, 8, 9, 10. I exchange 5 1 beads to 1 5 bead, and I exchange 2 5 beads to 1 10 bead. 20, 30, 40, 50. I exchange 5 10 beads to 1 50 bead. 60, 70, 80, 90, 100. I exchange 5 10 beads to 1 50 bead. 2 50 beads will be exchanged for 100 bead. 200, 300, 400, 500, and I Where is the dog exchange is barking? 500 beads to 1 500 bead. Now the abacus shows 9, and this is 15, 110 and 15. This is 45,
4 tenths, and 1 5. This is Okay, in this way 100, you can count. and Yes, this is sir. 200. Now, now you see here. These are the beats of the कुत्ता किसके यहाँ भौंक रहा भाई बंद कराओ please. It is Yes, irritating. sir. You just close your mic. Mute your mic. हाँ, ones, tens, 100,000. तो 4 in the unit place. To count the beats. 1, 2, 3, 4. You write here 4. Tens place 3 beats, write here 3. 100 place 2 beats, write here 2. And 1000 place 1 beat, you write here 1. So 1234. So this is the Yes, method. sir. Your abacus is very simple. वो वाला थोड़ा difficult था, higher level का था, लेकिन दिखा दिया कि what is the abacus. वीडियो अच्छा लगा? ठीक है, चलो Yes, sir. कल अब इसको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है? Yes, sir. कल नहीं मीन्स मंडे. थैंक यू चिल्ड्रन. गुड नाइट. Good night, sir.